Combating COVID-19 crisis. Addressing health needs and immediate vulnerabilities. Although the informal economy contributes significantly to the Indian GDP, the needs of the informal sector workers are often overlooked in times of crisis. For these vulnerable population, COVID-19 did not only turn out to be a health crisis, but also an economic, social, and psychological crisis. The uncertainties of the virus, along with the lockdown, often left people wondering whether the virus or hunger would get them first. While the lockdown has been lifted, the effects of the virus are far from over. MHT has been relentlessly working in empowering women from vulnerable urban communities to develop their habitat for the past 25 years. This work has resulted in a strong network of more than 428 community action groups, CAGs, and the women leaders of CAGs have been invaluable in quickly and efficiently responding to the crisis created by the pandemic. When Housing Trust's approach when the COVID pandemic struck was that of access, awareness, and adaptation. And in terms of access, we concentrated on 4 issues. One is the food relief. Secondly, it was more about reaching direct cash transfers to the poor. Thirdly, we also facilitated access to government social security schemes. So for the relief work, we actually concentrated on immediately reaching out food rations to the most needy. जितना भी कार्मिका ट्रेनिंग लिए थे हम लोग, जितनी भी बहनें थे सबको 3300 रुपया मिला, जिससे उस पैसा से हम लोग का कोविड में बहुत स्थिति खराब था घर में राशन पानी के लेके, तो वही 3300 रुपया से राशन पानी लिए। मेरा पति हा कमाता अच्छो गुद्दो घर चलतो, फिर गुजर गया, फिर मुसीबत आएगी कि भाई कमाने वाला नहीं है मेरे को। कोरोना लागो तो घर पे आके कोई हेल्प करता नहीं, मांग लान खाया। तो मेरे सेंटर वाला एमएटी सेंटर वाला राशन बांट रहा, मन नहीं ठा पड़ी तो मैं गई ना मुंडा उन्हें कि भाई मनी सामान दो, तो मैंने सामान दियो। पूरा रसोड़े का सामान दिए थे लोग, पूरी किट थी। We almost provided 14 million meals across 11 cities and 7 states that we have been working. तांदूळ बिलू जमा केले, काही डाळी जमा केल्या, टमाटे ते असं जमा करायचे एक दिवस सगळे मिळून द्यायचे आमच्या चाळीमध्ये, म्हणजे खिचडी बनवली आम्ही 8 दिवस। हे जातात तिकडे घेऊन खिचडी संध्याकाळी वाटायला। The second approach, that of awareness, we concentrated on increased health awareness, so COVID appropriate behavior, and also delivered health safety kits to our women at the slum level. कोरोना बीमारी बारे में बताया कि ये बीमारी एक दूसरे से सांस की बीमारी है, फैलती है, तो जितना हो 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और जितना हो सके भीड़ में ना जाएं, भीड़ से दूरी बना के रखें, अपने घर परिवार के, अपने बच्चों को और अपने बस्ती के सभी लोगों को बताएं। हमने जैसा हमने ट्रेनिंग बताया था वैसे अपने बस्ती में काम किया। गांव भी नहीं जा सके, मेरा भाड़ा नहीं था, तो वही दीदी मेरा हेल्प किए। दीदी बोले किट दिलवाए हैं, राशन दिलवाए हैं, सब चीज़ किए दीदी। उसके बाद फिर बोले कि दीदी ऐसे कैसे पार लगेगा, मेरा गांव भेजवा दो, गांव जाएंगे। तो वही दीदी बोले कि ठीक है, तो टिकट निकलवाए दीदी फ्री वाला, वही 100 लोग के टिकट पर गांव भेजवाए। तो फिर हम सब अच्छी तरह से गांव चल गए, फिर 6 महीना गांव में रहे तो फिर आए हैं। MHT से पहले हम लोग को मास्क बनाना सिखाया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाया, फिर मतलब बहनों को सिखाया उसको। मास्क बना के बहुत अच्छा लग रहा है कि ताकि मतलब जिसके पास है नहीं है उसको मतलब मिल रहा है, तो बहुत बड़ी मदद मिल रही है उनको, जो खरीद नहीं पा रहा है उनके लिए। हेल्थ માટે અમને તાલીમ આપી અને ત્યાંથી અમને પછી સામાન આપ્યો। સામાનમાં એક મોટો થેલામાં નાના છોકરાનો વજન કાંટો,
પછી આપણા મોટાનો વજન કાંટો, પછી બીપીનું મશીન અને પછી ઓક્સિજનનું મીટર, પછી મેજર ટેપ. હેલ્થમાં મેં તાલીમ લીધી સગર્ભાની, ત્યાં મુંબઈથી ડૉક્ટર આવ્યા હતા, એમની મને તાલીમ આપી. તો એમાં એવું શીખવાડ્યું હતું કે ધાત્રી માતા બાળકોને કઈ રીતે ધવારે, એટલે એ રીત અમને શીખવાડી थी, ये मैं बहनों ने सिखवाड़ी, तालीम यहाँ थी। खान पीन के बारे में भी मैंने बताया, जैसे अंकुरित दाना खाना है, वो खाना है, हरी सब्जी है, दाल है, ये सब चीज़, फ्रूट है, ये सब चीज़ खाओगी तो आपको दूध होगा तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगी। On the rehabilitation side, we will also ensure that there is adaptation amongst the slum population so that they can address such pandemics for the future. So there is a behavior change amongst them. On the rehabilitation, we are also going to introduce zero interest loans so that their incomes they can reset or restart their small micro level businesses and their incomes can increase. And what we are also going to do is also upgrade their skills so that use digital technology or cashless technology more. Also provide them with business counseling or financial counseling, which would be required to adapt to pandemics like COVID. It was also possible because we used technology to the maximum for the first time, because we weren't able to move around so much physically. So technologies were used in needs assessment and also in the outreach. I mean, all of these technologies largely were used by the poor women who were a part of the community action groups. MST से मतलब वही गूगल मीटिंग और जूम पे मतलब हमको होती थी हमारी, या कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, तो उस पर ना हमको बताते थे कि मतलब आप है ना इस तरह से लोगों को समझाओ। तो हमको MST में जागृति ऐप डाउनलोड कराए थे। तो उस ऐप में बच्चे को कैसे रहना है, घर से बाहर नहीं खेलने जाना है, और बच्चों को क्या क्या खाना है और कैसे खाना है, ये सब ने जागृति ऐप में बताया गया है। We also tried to address vaccine hesitancy amongst the people. कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने में हमारे बस्ती के लोग, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि लगवाने से कि मौत हो जाती है या बीमारी हो जाती है। लेकिन इसके लिए जब हमको MST ने अपनी बताई कि नहीं वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो फिर मैं घर घर में जा कर के सबको बोल रही हूँ। वैक्सीन का हमको हमारे घर आके बोला कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, उससे ना बीमारी नहीं फैलेगी, दूसरों को भी मतलब नहीं वो होगा, आप वैक्सीन लगवाओ। हम डर रहे थे मगर उन्होंने बोला नहीं लगवाना ज़रूरी है, तो हमने उनकी बात मानी, हमने वैक्सीन लगवाई कल। तो इन बस्ती वालों को और सभी को यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये सब सुविधाएं मिली हैं, समय से पहले मिला है, और जो बिना मांगे मिला है वो इनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद।